Good, good morning, students. Okay, we are going to start the problems on Einstein's theory of photovoltaic equation. Okay, so जैसे कि हमने पहले क्लास में देख चुके हैं द फोटोवोल्टिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोवोल्टिक इक्वेशन, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे. सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, what is this numerical problem? The work function of cesium metal is 2.14 electron volt. यानी कि work function is given in terms of 2.14 electron volt when a light of frequency means normal frequency 6 into 10 power 14 hertz is incident on metal surface. Therefore, the photo emission occurs. Then find energy of incident photon and maximum kinetic energy of photoelectrons. Okay, H is 6.63, that is Planck's constant 6.63 into 10 power minus 34 joule second, and 1 electron volt का वैल्यू कितना रहेगा 1.6 into 10 power minus 19 joule. This is given. Okay, so how to solve this problem means, so already आपके पास कुछ वैल्यू दिए सो है, that means work function value. Work function कितना है 2.14 electron volt given, right, given. Therefore frequency कितना है 6 into 10 power 14 hertz. Okay, so what H value 6.63 into 10 power minus 34 joule second, right. So you have to find out kinetic energy and energy, right. तो आप क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ई काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच. ओके, टू कैलकुलेट ई. ओके, तो फर्स्ट वन आप क्या करना है बेटा, टू कैलकुलेट एनर्जी बोले तो ई, राइट. सो व्हाट इज एनर्जी, ई इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 6.63 into 10 power minus 34 multiply by frequency is given beta already, this beta. Okay, so 6 into 10 power 14, right. So if you multiply and solve this, you will get answer 39.78 into 10 power minus 20 joule. So this is your energy, right. So next one, this is first one. Second one क्या है बेटा, to calculate kinetic energy, that is maximum kinetic energy. Okay, so how to find kinetic energy from the Einstein's energy equation? You know kinetic energy E equal to W plus kinetic energy maximum, right? No, so Einstein's photovoltaic equation. Then we have kinetic energy find out करना है, मतलब kinetic energy यहाँ पे लेके आइए. So you will get E minus W. What is the value of E? 2.486 minus work function is given already. This much work function 2.14 electron volt, right. So तो हम यहाँ पे एनर्जी 39 पॉइंट यहाँ पे आए ना. सो इसको हम क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना, मतलब 3.70 डिवाइडेड बाय 1.60 10 पावर 19. तो अगर से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका एनर्जी कितना आता है बेटा 2.48. ओके, सो दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट्स व्हाई आफ्टर दिस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, this is kinetic energy maximum. So you have to find the value of kinetic energy and value of energy in terms of joule, in terms of kinetic energy. Okay, so आप लोग लिख लेना है स्टार्टिंग से. Okay.